Hello guys, this is Muskan here. Call me a reader. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to read all the bookshelves of our fellow readers or followers that I have. And मैंने bookshelf मैंने book club में randomly एक दिन message किया था कि if you guys want to show your bookshelves or like flaunt your bookshelves, then you can just send the pictures. And we have got 72 responses, like 72 freaking responses, brother. So I'm very excited because मुझे दूसरों के बुक शेल्फ देखना बड़ा पसंद है. मतलब आई कैन लिटरली गेट इट कि किस तरीके के आप रीडर हो जस्ट बाय लुकिंग देयर बुक शेल्फ्स, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. ऑल्सो इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड इट येट, विच यू शुड हैव, बट इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड इट येट, I have created another space for my books. Matlab, the moment I saw this space, I was like, we can definitely do something here, okay? So I got two bookends from Meesho or maybe Amazon, and brother, it just looks so pretty, okay? Matlab, the moment you'll enter in my room, you will immediately understand that this room belongs to a book reader. I love this about my room. Anyways, I'm too excited to keep calm right now, so let's just get started with the video. Also, just a little disclaimer, if I'm judging your books, that does not mean that I'm a mean person, okay? Because at one point, I did have a very chotu sa bookshelf, which I painted it with my own hands, okay, when I was not earning. And after a point, I did manage to have three bookshelves, like one right now and two in my Gurgaon wala ghar. And now I also have this place. So, place. I also have this place. Space. What is wrong with me? Why am I mixing space with place? Now I also have this space. Okay. Anyways, so let's just get. You see, this is what happened when either I'm nervous or either I am too excited for everything. Okay. So this is what usually happens with me. So I'm just too excited. So let's just get started with it. Brother, the first time, very first time that I have seen this particular bookshelf, I just knew that this is going to be me and my future husband's bookshelf because it just looks so cozy. It just looks so husband wife bookshelf, like very cozy and very cutesy, very घर टाइप वाला वाइब दे रही है. मतलब मेरे को वो वाली बुकशेल्फ बड़ी अच्छी लगती है जो ऐसी, मतलब बहुत ऐसी सोफिस्टिकेटेड, ऐसी बहुत लाइब्रेरी टाइप वाला फील ना दे, बहुत ऐसी घर घर टाइप वाला फील दे. मतलब आई विल डेफिनेटली विल बी टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बुक शेल्फ टू बिल्ड similar to this one with my future husband if he reads. I'm gonna put this on my biodata. Please, if you read books, then only you will be able to manage me, because I would rant a lot about books. ठीक है, so उस आदमी में इतना तो थोड़ा patience होना चाहिए कि वो सुन सके. So I definitely rate this 9 out of 10. It just looks so cute. It does just look like this bookshelf looks really cluttered, like really scattered. And I think this bookshelf is of some person who is really into classics, and I don't read classics, so ठीक है, but like 4 out of 10. There's a penguin being crushed, like crushed between all the books, but ठीक है, yeah, 4 out of 10. I just know this in my gut. I just know this thing कि this bookshelf, this corner is of a guy. I don't know why. I just have this feeling because this is not how a girl's corner look. I don't know why. Matlab, the moment you will enter at my place, you'll just know that there is a girl living in this room. In every corner that you will see, okay? In every freaking corner, you can just understand कि कोई तो लड़की रह रही है. Exactly like that. I just know कि there is a guy behind this, and it also is very academic. मेरा पढ़ाई से हो गया भाई साहब. 3 out of 10. Please do not show me any academic book. This one looks very cute. Matlab, I still remember that my mother has this exact dressing table, and I just really like it. And there is also a lot of sprayed edges. I can see that there are two sprayed edges book. Why do I don't have any sprayed edges? I really want to have a sprayed edges book, but I don't. I don't know why. How do you guys manage to get it in India? I'm not able to understand till now. And I really like the fact that once we'll take these selfies, like the mirror selfies, it is going to be banger because of this dressing table. मजा आ जाएगा देख के. 8 out of 10. This bookshelf kind of looks like दरियागंज में जैसे वो बुक्स रखते हैं ना, मतलब पूरा ऐसा काउंटर वगैरह लगा के. Why does this looks like that?
but I really like the collection here. I've never read Wimpy Kids. I don't know why. It's Wimpy Kid only, no? Huh. I've never read this particular series, but I've seen a lot of people reading the series. We'll rate it 6 out of 10. Just because of the collection, because I'm still not able to understand ki bookshelf hai kaisi. This is such a cute bookshelf. Matlab, someone I think is in making of a big bookshelf, or maybe the person is traveling a lot. That's why they have a small bookshelf. I really like the penguin over there. I think it's gonna be 7 out of 10. Next we have is this bookshelf. See, this is what I'm telling you. I know this thing. I know that this bookshelf belongs to a girl. Why every girl's bookshelf is just so girl coded, okay? It's just so cute. And there's so many Polaroids also. This looks so cute. Hey, this is so pyari pyari. There's so many. I love the people who put these fairy lights. क्या सुंदर लोग होते हैं भाई, इतने एकदम प्यारे से लोग होते हैं सच्ची में. विल रेट इट 8.5 आउट ऑफ 10. ठीक है. आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट लाइक वन बुक शेल्फ की ओ माई गॉड शिट इट इज सो गुड टू गेट इट 10. मेरे को बहुत ऐसा जज जज टाइप वाला फील आ रहा है. नेक्स्ट वी हैव इज दिस बुक शेल्फ. Why do I feel that I've seen it somewhere? The owner of this bookshelf, have you been recording any video or like on are you active on Bookstagram? Why do I feel that I've seen this bookshelf somewhere? We'll rate it 6 out of 10 because this is just like a cupboard kind of thing. But I really like how as a stair kind of thing you have created with the books here. It's good. Bhai, I have done this thing, like this page wala thing on the wall. I did this in my previous PG. कितने सारे लोग कर रहे हैं भाई. And fairy lights, this is very cute, very nice, very cozy, very night kind of vibe. It's pretty. 7 out of 10. And we have a chotu sa bookshelf. I think that this is also again in the making of a big bookshelf right now. I really like the painting going in like in two directions. ये भी बहुत cute सी हैं. These are very cute. Cute. 7 out of 10. I always wanted to have this chotu like this triangle like the tree kind of bookshelf. But then why do I feel that I'm gonna break it? I don't know why. I'm gonna rate it like 4 out of 10. Because it's very chotu, very simple. Okay, it's like more of a functional bookshelf, I think. And we have is this bookshelf. Bhai sahab, why do you people have a lot of academic bookshelves? And also, how did you people have these tables while you are still being a student? Matlab, I still remember that I never had a table when I was studying. I never had a table. I used to have this study table जो आप बेड पे लगा सकते हो. उस पे मैं लैम्प लगा के पढ़ाई करती थी अपने 10th एंड लाइक 11th एंड 12th में ऑल्सो, जिसमें मेरी मम्मी मेरे को हमेशा डांटती रहती थी कि बंद कर दे, लाइट बंद कर दे. बट देन तुम लोगों के पास में टेबल है पढ़ने के लिए, मतलब प्रॉपर स्टडी टेबल. आर यू पीपल लाइक रिच? ये कोई तो मेडिकल स्टूडेंट की स्टडी टेबल है भाई साहब. नीट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे. 3 out of 10. Please keep these kind of bookshelves away from me. I don't like the academic bookshelves. I have healed, please. Science और math से मैं heal हो चुकी हूँ. आप मेरे को फिर से मत torture कीजिए. Someone has made this bookshelf, I think, with the cardboard. It's so cute. Someone has actually made a bookshelf out of cardboard. It's so pretty. I don't like the ratios which are written. Maths तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा. But then it is just such a cute effort to create because भाई मैंने भी किया था भाई, मैंने भी किया था. मतलब I literally painted an entire bookshelf ऐसा खुद से because I was not earning at that point, and all the money that I could manage used to go to all the books that I used to have. 8 out of 10. Brother, 8 out of 10 for all the efforts, okay. 8 out of 10. Next we have is this corner. It's so cute. भाई मेरे को भी एक ऐसा बीन बैग लेना है, बट ये वाली बुक शेल्फ के पास में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है. जस्ट लाइक इतना सही एरिया बचा होगा और यहाँ पे टीवी आ जाता है तो इसलिए. बट अगर छोटा बीन बैग अगर किसी को मिले तो प्लीज़ जस्ट टेल मी. मेरे को भी एक बीन बैग चाहिए. इतना गंदा इन्फ्लुएंसर हो भाई मैं, मतलब देख के मैं खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ लोगों को. इट्स वेरी क्यूट. आई रियली लाइक द प्लेसमेंट ऑफ बीन बैग विद द बुक शेल्फ. इट्स वेरी क्यूट. कलेक्शन तो अच्छा है भाई साहब आपका. वेरी नाइस कलेक्शन. आई लाइक इट. 8 out of 10. Someone has placed newspapers अपनी books के नीचे. This is so brown household coded. मतलब
मेरी मम्मी सारी बुक्स को ना ऐसे साफ करके, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि क्या देख रही है मम्मी, बट सारी बुक्स को ऐसा कभी कभी साफ करके ना ऐसे न्यूज़पेपर लगा देती थी कि गंदी ना हो जाए बुक शेल्स। सो क्यूट, वेरी क्यूट। मेरे को एकदम ऐसा नॉस्टैल्जिया हो गया मेरे को मम्मी ताकि एकदम ही वेरी क्यूट। 7 out of 10। भाई द पीपल हु आर मेकिंग देयर बुक शेल्स खुद से विद द कार्डबोर्ड, हाँ ब्रदर यू हैव माई ओन हार्ट, इट्स सो क्यूट, इट्स सो क्यूट। मतलब मेरे को एकदम ऐसे मेरे पुराने वाले दिन याद आ रहे हैं कि व्हेन आई यूज्ड टू लाइक बी अनएम्प्लॉयड, मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे, जो भी मैं थोड़ा बहुत सेव कर पाती थी उससे मैं बुक्स खरीद लेती थी, तो बुक शेल्फ नहीं थी। और आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर कि मैं बुक्स और बुक शेल्फ तो अपने पैसे से लूँगी, मैं पापा के पैसे से नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज माई फादर यूज टू हैव दिस हैबिट कि अगर मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ तो यू हैव टू टेल मी कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू आर रीडिंग। आई एम लाइक ब्रदर this is exactly why we should not be doing that. So and I think ki books is like my luxury, my comfort space, and I never want anyone, be it my husband, be it my father, anyone to be in that space ki मैं तुम्हें books दिला रहा हूँ so you have to tell me कि what kind of books है. No brother, not gonna work here. Next is this bookshelf. I think that we have the same bookshelf. Like मेरी 6 की है, yours is 3, like 3 वाली जो होती है, या तो वो 2 bookshelf, मतलब एक ही bookshelf को 2 कर लिया गया है, या फिर वो 2 अलग 3 वाली है, but we have very similar bookshelves. हाँ ये same ही है भाई, ये same ही है, very nice. I think that I've influenced you people, right? If you have got this bookshelf after seeing mine, yeah, we're gonna rate it 6 out of 10. Next is this. Someone has actually created like a collection of all the bookshelves that they have in the room. It's such a good idea. मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि पूरे रूम में दिखे, सिर्फ एक जगह पे नहीं, पूरे रूम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुक्स का दिखता रहता है। मतलब मेरे यहाँ पे इस साइड में बुक शेल्फ है, दिस इज़ द बुक एंड कॉर्नर। मेरी किचन में मेरा कॉफ़ी स्टेशन है जहाँ पे मेरे पास में 3 बुक वाले कप्स हैं। आई कैन शो यू, बट मेरे को उठने में आलस आ रहा है। आई अटैच द फोटोज़, ठीक है। तो मतलब मेरे को ऐसे देख के बड़ा ऐसा अच्छा लगता है कि पूरे रूम में कहीं ना कहीं बुक्स दिख रही हैं। मेरे पास में यहाँ पे एक कारपेट भी है विच सेज दैट दिस हाउस रन्स ऑन बुक्स एंड कॉफ़ी, विच इज़ वेरी ट्रू। तो बड़ा ऐसा मेरे को अच्छा सा लगता है। इट्स वेरी नाइस। 8.5 out of 10। मेरे को वुडन वाली ऐसा जो बहुत प्यारा एंड वुडन वाला एस्थेटिक देती है ना, वो वाली बुक शेल्फ बड़ी अच्छी लगती है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी क्यूट। प्लांट्स भी रखे, कैन वी कीप लाइक प्लांट्स, मतलब आई वॉन्ट टू कीप अ प्लांट हेयर। मेरे पास में एक प्लांट रखा हुआ है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू कीप अ प्लांट हेयर, बट आई एम नॉट श्योर कि उसमें कहीं मतलब मॉइस्चर की वजह से बुक्स को कुछ हो ना जाए, कुछ फंगस वंगस ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया भाई साहब, I would die. I would not be able to forget myself. But I like this bookshelf. It's very cute. Do not like the collection that much, but bookshelf is cute. So 7 out of 10. That's it for today's video. I hope you guys had a lot of fun while watching this video. And अगर आपकी रह गई थी bookshelf rate करने के लिए, I'm so sorry. मैं बोलते बोलते थक गई थी, रीज़न ये था। So I kind of skimmed through a few bookshelves, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। Anyways, I hope you guys had a lot of fun, and I definitely did had a lot of fun. मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऐसे दूसरे की bookshelf देखने में, दूसरे के book collection stock करने में, तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। And I'll see you in the next video. Till then, keep reading. Okay, I'm watching you people. Keep reading. Okay, bye.